Good evening, sir. I am typing in chat box. People are wishing you. Good evening. Am I audible? Kindly confirm. Yes, sir. Okay. Yeah, kindly keep posting your queries. Till then, I will say a few words about a new program which we have started, and Yogita will do the additions. You see, what interacting with the aspirants, I have been feeling there are a lot of repeaters. I'm not talking of freshers at all now. Talking of repeaters, they have been to SSB several times and they feel that they have worked hard, they have brought about improvements, they have done a lot of things as they've gathered from the internet and all that, and they're getting screened out or conferenced out. And they are unable to find answers as to what they should do next to improve their chances of selection. So, primarily for these people, we have started this program. And what I realized was that most of these aspirants, they are not interested in longish engagement. If you are interested in longish engagement, then we have our medium and long-term programs. So for this catering for this kind of aspirants, we have started this program in which the plan is that the aspirant discusses with me as to what transpired at the SSP and what, as per him or her, were the major reasons for which the person got screened out or conferenced out. Often they may not be correct. So, I am in a position to assess, as to what transpired and thereafter evolve a roadmap. So to do that, as far as your interview thing is concerned, I'll discuss with you. As far as whatever transpired in the GTO, I'll discuss with you. And as far as the psychology tests are concerned, you submit the stuff to me. So I will assess that, I will analyze it, and give you, pointers in case they are required. So in this, and then I give you a roadmap after discussing with you, that these are the things which you should do over a period of time to enhance your chances of selection. Initially, what Yogita and I were talking, then we had thought that one interaction may be adequate to resolve the issues of the candidates. Then, after talking, we realized that probably, two interactions would be good because we felt in one interaction we will do all the things which I just stated. And thereafter, since we would be giving you the book of ours, the practical guide to become an officer, as also which has got the fitness aspects also. So you get some time to digest the contents of the book and also the fitness guide, and maybe you are having certain issues which are coming to your mind, queries are there as per the contents given in the book, because they are often at variance from what you are gathering from the internet, from other coaching academies, and maybe your peers and the people who have been to SSBs and all that. So that is one thing. And also physical fitness is an issue where people are needing advice. So we thought that we can have a second interaction on these issues. So this is the plan. We have planned a very reasonable fee of 5,000. So this is what it is. Anything to add, Yogita? Nothing, sir. This much you have covered everything. Okay, fine. So this is what it is.
So now I'm ready to take on your questions. So good evening, welcome, Jai Hind. Okay, so Harsha is asking, मेरे को सोशल कुछ नहीं आता, मैं जीडी एंड लेक्चरेट के लिए कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करूं सर? देखिए, हर्षा, मैं ऐसे लेजिस्लेट नहीं कर सकता हूं कि आप क्या प्रिपेयर करो। मैं ये एंटिसिपेट नहीं कर सकता कि जो है 20 SSB में जो है जीटीओ कौन से जीडी और लेक्चरेट के टॉपिक डालेंगे। इस तरह का कोई चीज मेरे पास है नहीं, और इस तरह की कोई चीज अगर करता भी है तो वो एक सेंसिबल अप्रोच नहीं। आपको जो है अपनी नॉलेज एनहांस करनी, जनरल अवेयरनेस इंप्रूव करनी होगी, और वो झटके से हो नहीं जाएगी, हल्के हल्के आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। और जिस तरह से आपने मैसेज डाला, लगता है कि आपको इंग्लिश में भी शायद इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो बच्चे देखिए, इंडिया सेंट्रिक रहिए, इंडिया के हिसाब से देखिए, इंडिया की ज्योग्राफी अच्छे से समझिए, इंडिया की इकोनॉमी समझिए, इंडिया के रिलेशंस नेबरिंग कंट्रीज और मेजर पावर से समझिए। उसके बाद फिर आइए जो कि करंट चीजों में हो रहा है। केजरीवाल साहब को बेल मिल गई, क्यों मिल गई, क्या हुआ, क्या ये पीएमएलए के केसेस हैं, क्यों इनमें बेल नहीं मिलती, इलेक्शन होने वाले हैं उसमें क्या होने वाला है, और वेरियस चीजें हैं, जैसे कलकत्ता में हुआ रेप मर्डर केस हुआ, उस पर क्या पॉलिटिक्स हो रही है, मणिपुर में क्या हो रहा है। तो लाइक दैट यू कीप डूइंग। So this is what you should be doing. My broad advice to you would be, Harsha, that it will make sense for you to join our guidance program. क्योंकि यहाँ पर हमारे ग्रुप सेशंस में आपको इन सारी चीजों की प्रैक्टिस मिलेगी, और मेरे से गाइडेंस मिलेगी, तो आपको और हल्के हल्के क्लैरिटी आती जाएगी। और कम्युनिकेशन स्किल्स, जनरल नॉलेज के टॉपिक, लेक्चरेट, पीपीडीटी, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज जब आप करते रहेंगे ग्रुप में, तो आपकी एबिलिटीज इन सारी चीजों में इंप्रूव होगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। तो ये मेरी आपके लिए सलाह है। ओके, थैंक यू। रुचि, whenever possible, be very kind of you to please guide with an outline to prepare for the territorial army exam. बेटा रुचि, मेरे को जो है रिटन एग्जाम की नॉलेज नहीं है। ब्रॉडली मैं ये जानता हूं कि चीजें वैसी ही हैं जैसे कि आपके सीडीएस एफ कैट वाले होते हैं। पहले टेरिटोरियल एग्जाम का रिटन एग्जाम इजी होता था, अब उन्होंने डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा दी है जिससे कि ज्यादा लोग क्लियर ना कर पाए। ठीक है ना, जैसे एफकेट एग्जाम बहुत इजी है, ये का एग्जाम इतना इजी नहीं है। और इसमें जो है अनलाइक ये एमसीक्यू, इसमें जो है थ्योरी वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपकी इंग्लिश रिटन एक्सप्रेशन ये भी रिलेवेंट होता है। बाकी बेसिक नॉलेज बेस वही है, पैटर्न थोड़ा इसका डिफरेंट होता है। अब ना ये मैंने एग्जाम दिया है, और इतना मैं जानता हूं कि जो बेसिक कॉम्पिटेंस जिन लोगों की ठीक ठाक है वो उसे पास कर देते हैं। ठीक है ना। बाकी इसकी इतने डिटेल में मैं जा नहीं सकता, क्योंकि आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड ना, तो मैं एग्जाम दे रहा हूँ। और जो है, अगर मेरे एस्पिरेंट्स कुछ ने दिए होते हैं तो उनका हम डलवा सकते हैं। मेरे पास है भी, एक विशाल थे, विशाल मणि, जो टेरिटोरियल आर्मी का क्लियर किया था उन्होंने। तो मे बी उनसे हम थोड़ा पॉइंट्स ले लेंगे, जो कि था सम टाइम वी विल गेट सम पॉइंट फ्रॉम सम ऑफ दीज एस्पिरेंट्स जो टीए के हैं, जिन्होंने रिटर्न क्लियर किया है, तो उनका हम थोड़ा इसमें डाल देंगे। ठीक है रुचि, दैट इज व्हाट वी विल डू। वी विल ट्राई एंड डू, आई मीन आई कैन नॉट प्रॉमिस, बिकॉज वी विल हैव टू request these aspirants who have been our students. Fine. Thank you, Ruchi. So kindly make a note, Yogita, please, of this. Huh? Yes, sir. TA. Sonakshi, I got screened out. What should be my next step? अभी मैंने समझा, नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। अगर आपको कॉन्फिडेंस और ओवरऑल गाइडेंस की जरूरत है, तो फिर मीडियम टर्म के लिए ज्वाइन करिए।
और नहीं तो अगर आपको स्पेसिफिक यही 3 क्वेरी सेटल करनी है तो यू कैन ज्वाइन आवर दिस न्यू प्रोग्राम व्हिच वी आर स्टार्टिंग। ओके, थैंक यू सोनाक्षी। Sonakshi is asking another question. It's hard for me to get into routine. Sonakshi, this has to do with motivation. ये इसका इशू का रेजोल्यूशन मेरे पास नहीं है, आपको खुद करना पड़ेगा। आप देखिए, एक चीज तो ये होती है, जैसे मेरे पास आएंगे मैं आपको बता सकता हूं कि क्या करना, ठीक, तो वो तो बता दिया मैंने आपको, लेकिन उसको करने की मोटिवेशन और डिसिप्लिन या कमिटमेंट वो आपकी इंटरनल चीजें हैं। मैं आपको हेल्प कर सकता हूं उन्हें इम्प्रूव करने में, अनडाउटेडली हमने बहुत स्टूडेंट को हेल्प किया है। उनका लाइफस्टाइल रूटीन इतने फोकस्ड नहीं थे और उनकी डेली एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस एनहांस हुई है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये चीजें करनी आपको ही पड़ेगी सुधार। ठीक है बेटा, तो दिस इज व्हाट इट इज। यू कैन ज्वाइन आवर प्रोग्राम and maybe with the influence of the group, a positive influence and advice from my side, and primarily once again motivation and discipline internally inculcated with the desire to do so, then you will become more effective in your life, and then your chances of selection at SSB will also. So it is worthwhile giving it a try. You can join our medium term guidance program. Okay. Yeah, thank you. Inversed egg. Good evening, sir. Hope you are keeping well. Thank you so much. I presume the same at your end. God bless. I wanted to ask, when you mentioned the goal of 40 push-ups in one set, are these fully extended? Yeah. No half business. No half or quarter. Full, yeah, proper push-ups. Okay? Yeah, that's it. Thank you. Abhimanyu. Sir is doing masters, reflect less interest in armed forces. No, not at all. Not at all. Don't get bothered about these things. Whatever you're doing in your career as per your interests and talents, go ahead and do that. And come for armed forces. Don't get bothered about this. Interviewing officer kya sochega. Don't bother for that. Yeah, thank you. Tanu, postgraduate from IIT Indore and currently working as chemistry teacher and physics wala. Very good. I had NCC during my graduation. I want to give my SSB by NCC special entry. There is no problem. You can do that. You can do that. But I would still advise that do not bank entirely on this NCC entry. Do clear your CDS and AFCAD exams, because the percentage of screening in is higher in these entries. Fine, because they're more serious aspirant coming through these entries. NCC is a less serious entry. NCC and SST Tech, they are rather unserious, non-serious kind of entries as we see from the SSB's perspective, selector's perspective. Fine. So this is what it is. Balance. You're very good, which you should be. IIT वाले हो आप, तो एनसीसी में भी बात बननी चाहिए आपकी। That's what it is. Fine, Tanu. Thank you. Naresh, tell how to build strong communication for serving candidate. हाँ, सर्विंग कैंडिडेट्स के दो बड़ी प्रॉब्लम होती है नरेश, एक जनरल नॉलेज, एक इंग्लिश। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट मेरे पास घर मिलने आया, मेरा स्टूडेंट होने के बाद वो 2 बार एसएसबी में सक्सेसफुल नहीं रहा, और उसकी मेजर प्रॉब्लम ये रही, वो हार्ड वर्किंग है बहुत, ही इज इंस्ट्रक्टर, ही इज इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग इन 2 कोर्सेज, वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। उसका जो था अपना एससीओ में बात नहीं बनी, अब वो पीसीएसएल ट्राई कर रहे हों करेंगे, और मेरे पास लाए थे वो मेरे को जो था, क्योंकि एमएस वर्ड में टाइप करके नहीं भेज पाए, उनके पास कुछ लैपटॉप वगैरह की प्रॉब्लम थी, फोन में उनसे होता नहीं था,
पीडीएफ में चेक नहीं कर पाता हूं, तो इन इश्यूज की वजह से वो अपना करीब 5-6 महीने में भी मुझे रिटर्न वर्क नहीं भेज पाए। मेरे घर 2 बार मिलने आए वो, तब उन्होंने चेक कराई थी चीजें। अभी भी लास्ट वो मिलने आए तो मैंने देखा उनकी इंग्लिश में बहुत इश्यूज थे। तब फिर उन्होंने रियलाइज किया कि हाँ ये बहुत टाइम ऐसे ही जाया कर दिया, इतना एफर्ट भी लगाया। तो उन्होंने कहा सर अब मैं आपको रेगुलरली जो है ये जनरल नॉलेज के ऐसे, सोशल इश्यूज पे ऐसेज वगैरह लिख के भेजूंगा, सेंटेंसेस भेजूंगा, जिससे आप भी मेरी ग्रामर वगैरह चेक कर पाए। क्योंकि आप अपने आप करते हैं पर चेक नहीं हो पाता। इंटरनेट से कर सकते हैं, वैसे करने को तो क्या नहीं किया जा सकता, पर हम जब चेक करके देते हैं तो आपको उससे ज्यादा वैलिडेशन हो जाता है कि हाँ भैया मैं ठीक लाइन पर हूं। तो ये है, तो नरेश हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करना आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। पर शर्त वही है कि आपको भाई ये रिटर्न वर्क वगैरह हमें भेजना पड़ेगा, और एमएस वर्ड में भेजना पड़ेगा, जिससे हम उसे चेक कर पाए। पीडीएफ वगैरह भेजते हैं, हम उसे चेक नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट इट इज। बाकी आप देखिए हमारे पास जो है स्टूडेंट रहे हैं जो कि बिल्कुल हिंदी मीडियम से आए, और उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट किया, और फिर वो सक्सेसफुल हो पाए। बाकी कोई छुपा हुआ राज नहीं है। आपको ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा लिखना है, ज्यादा बोलना है, सारी चीजें करनी होगी। दैट इज फाइन। ओके नरेश, थैंक यू। ऋषभ, आई कैन स्पीक इंग्लिश बट नॉट फ्लुएंटली। विल इट अफेक्ट? या इट विल अफेक्ट, क्योंकि आपका पहली बात कॉन्फिडेंस ही जो है शेकन अप होगा। आप जो है देखेंगे बाकी लोग जो अच्छे से कन्वर्स कर पा रहे हैं, तो आप थोड़ा हैंडीकैप महसूस करेंगे। तो प्लीज इंप्रूव करिए। हाफ बेक्ड एफर्ट्स में सेलेक्ट होने के चक्कर में क्यों रहते हैं? इंप्रूव करिए, पूरा अपना करिए, एबिलिटी एनहांस करिए। जिंदगी बड़ी है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो बच्चे, कम्युनिकेशन स्किल और मैथमेटिकल एबिलिटी, ये फाउंडेशनल स्किल्स हैं। जब आपका माइंड ग्रो करता है, इनकी यूटिलिटी जिंदगी में हर जगह है। इन दो फाउंडेशनल स्किल्स के बेसिस में आप बाकी नॉलेज एक्वायर कर पाते। मैंने देखा है लोग इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी में पीएचडी कर रहे हैं, मैथमेटिकल एबिलिटी कमजोर है, वो फंस जाते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करने में दिक्कत होती है उन्हें। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट एबिलिटीज हैं। और जैसे जैसे सर्विस में एडवांसमेंट आएंगे, हम आर्ट्स ग्रेजुएट को आर्मी तो ले रही है अभी तक, ये बंद करना पड़ेगा आर्मी को। ठीक है ना? तो डेफिनेटली आपको ये दोनों चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है, इसे करिए। तो दैट इज व्हाट इट इज। हमारा प्रोग्राम में आइए तो हमारे इसमें आपको जो है आराम से वो मिल पाता है। आप हमारा नोट करो, भूषण मोरे का आप वीडियो सुनना। वो महाराष्ट्र के एक गांव से थे, और मेरे ख्याल से करीब 1.5 साल उन्हें लगा। बिल्कुल हिंदी मीडियम से थे, और उन्होंने हल्के हल्के एफर्ट कर करके इम्प्रूव किया, और आईएमए में ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट। थैंक यू ऋषभ। Nakul, I should start preparing for SSB side by side. Should not I focus on India first? अच्छा देखो नकुल बेटा, there is nothing like preparation for SSB. I will repeat what I keep saying in most of my talks. You see, the major things which will determine your selection are as your academic understanding. In your case, you are a student. Your understanding of English and ECM, allocate it a weightage of 35% in the overall SSB performance. Uh, 30% weightage to your English communication skills. Fine, oral, written. तो इंग्लिश मैंने वहां पीसीएम को आप
35 ले लो, 30 इसका ले लो, तो मिला जुला के एकेडमिक एबिलिटी एंड स्पीकिंग स्किल्स ही 65% हो गई। सबसे बड़ा वेटेज इसका है। उसके बाद 20% वेटेज फिजिकल फिटनेस एंड 15% वेटेज टू दैट। दिस इज व्हाट इट। So primarily try and understand. If as a student you are a good student and a very solid student, you are absolutely clear about your academic abilities and your English is good, your selection chances are pretty good. Even without physical fitness and general knowledge being good. Fine. And if but you should look for holistic improvement. So if you improve upon a physical fitness and general knowledge also, your selection chances would be good. तो ये नॉर्मल चीज है। इसमें क्या है एसएसबी की तैयारी? एसएसबी की तैयारी तो ये कोचिंग वालों ने, इंटरनेट और वेबसाइट ने कर दी है ना, कि साइकोलॉजी टेस्ट प्रैक्टिस करना, टूरीज लिखना, एसआरटी लिखना, फिर CIQ 1 CIQ 2 लिखना, वो रटना, बल्ली पट्टा देखना, गांठे बांधना। दैट बुलशिट, नॉट रिक्वायर्ड। आई हैव नॉट डन एनी ऑफ दिस थिंग। आई डिड नॉट इवन नो। इन साइकोलॉजी में आई न्यू कि ये थीमेटिक है, परसेप्शन टेस्ट आई न्यू कि ये स्टोरी लिखने का आता है। एसआरटी मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा टेस्ट भी होता है कुछ। तो नेचुरली आई wrote first time there, and because I was found okay for selection, I was selected. So that is how. ये चीजें करो, ठीक है बेटा ना कुछ। या थैंक यू। प्रीडेटर SF गुड। साहब जी सिपाही HK यादव सिग्नल कोर की हेल्प करो प्लीज, ऑफिसर्स ने उसको बहुत परेशान किया है, प्लीज हेल्प। I cannot resolve internal problems. Hello, am I audible, Yogita? Yes, sir. अच्छा, so Yadav, I can only help you become an officer. You take your circumstances in which you are living as a challenge, work hard, improve upon the things that I keep telling, and make an effort to become an officer. Fine? तो हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करिए, सिस्टमेटिक एफर्ट करिए, जो जो मैं गाइड करता हूँ उस पर अमल करिए, तो आपका करियर में एनहांसमेंट होगा और ऑफिसर बनने के चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे। आपके इंटरनल चीजों को मैं रिजॉल्व नहीं कर सकता, आपको ही खाली सलाह दे सकता। ठीक है बेटा? या थैंक यू। यस बॉयज एंड गर्ल्स, कीप पोस्टिंग योर क्वेरीज। ओके बॉबी, माय होम नेम इज आल्सो बॉबी। My schooling from government Hindi medium, but didn't participate in any extracurricular activities. How can I answer that question? I'm ACC entry now, sportsman. I have 3 national medals. Oh, very good. You're a tremendous chap. आजा यार हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर ले। अभी मेरे पास एक SF का आया है सॉलिड बंदा, who is also an athlete, done PD course, AXI and all of that. And I'm sure with our guidance and his motivated effort, he'll be able to work and become an officer. तो बॉबी आपका हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करिए, तो आपके चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे। खिलाड़ी हो, दम है, नेशनल लेवल के मेडल लिए हैं, तो इसका मतलब मेहनत करने का मादा तो आपके अंदर है। तो थोड़ी बहुत गाइडेंस से, अंग्रेजी जनरल नॉलेज वगैरह से इंप्रूवमेंट होगा, सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट बॉबी। थैंक यू। Dipayan, sir, what it takes to qualify the criteria of SSB? अरे अभी मैंने बताया, 4 चीजों पे फोकस करो। Academic competence. If you're a worker, then substitute academic competence with your work competence, your communication skills, your physical fitness, and general awareness. Fine? Yeah, thank you. Harshita. I have participated in GD before, but still GD scares me. Okay. तो बेटा हर्षिता, हल्के हल्के इम्प्रूव होगा। Create an environment where you can do this practice with your friends. If such an environment is not available, then No Frills Academy offers the solution. हमारे पास प्रोग्राम ज्वाइन करिए, do take part in our group activities, you know, you will gradually build up. हिंदी मीडियम वाले भी हमारे पास आके सक्सेसफुल हो गए। Have a word with Yogita madam after we have finished. ठीक है ना? Discuss
the things which you benefits you will get in our program. So maybe we can help you. Fine, Harshita. Yeah, thank you. Lights out. मुझे आपकी कोचिंग ज्वाइन करनी है, बट सर मुझे थोड़ा डर लगता है ऑनलाइन क्लास में, मेरे अंदर कैसे चेंजेस आएंगे? हैव अ वर्ड योगिता मैडम, चेंजेस क्यों नहीं आएंगे? देखिए, बात बेसिक ये है कि एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा, मोटिवेशन आपकी, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन आपका, हम आपको गाइड कर रहे हैं और एक अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आप ज्वाइन करिए। अगर आपकी मोटिवेशन है इम्प्रूव करने और आप सोचते हैं कि आप में डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन है, तो आपको डेफिनेट फायदा मिलेगा। और चिंता की बात नहीं, एसएसबी हुआ या ना हुआ, जिंदगी में डेफिनेटली आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज। या, थैंक यू। सुनील, प्लीज गाइड मी हाउ टू प्रिपेयर फॉर लेक्चर। अरे एक एक चीज को मत चुन के चलो यार, ओवरऑल होलिस्टिक देखो। लेक्चरेट में क्या है, आप जो लिखते हो वैसे ही बोलते हो। कोई टॉपिक है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, तुम इंट्रोड्यूस करोगे कि हाँ ये 47 पार्टीशन हुआ, तब से ये प्रॉब्लम चली रही, फिर 47 48 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, फिर करगिल में क्या हुआ, क्या क्या पार्लियामेंट में अटैक हुआ, क्या क्या चीज है, अभी क्या एटीट्यूड है पाकिस्तान का। तो ये चीजें हैं, और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या कन्वर्जेंस के एरियाज है, और फिर फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो कौन सी ऐसी छुपी हुई बात है? दैट इज हाउ यू विल टैकल एनी टॉपिक, चाहे राइटिंग में हो, चाहे लेक्चर डिलीवर करना हो। तो 3 मिनट होते हैं, बहुत ज्यादा कंटेंट डालने की जरूरत नहीं, 4 5 पॉइंट बताइए अच्छे से सब, 1 मिनट। ठीक है, और अपना एनालिसिस भी बताइए कि आपके हिसाब से, जैसे ये मैंने टॉपिक लिया कि फ्यूचर में क्या आप सोचते हैं होगा, तो देन इट बिकम्स पर्सनलाइज ना, कि भाई आपका लेक्चर ना कि किसी और का आपने उतारी हुई बात। दिस इज हाउ यू हैव टू डू। इसमें कोई छुपा हुआ राज नहीं है। बाकी सुनील, हमारा प्रोग्राम आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा इन सारी चीजों में। ठीक है, हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के आप सुनिए, यूट्यूब में बहुत डले हुए हैं, उससे आपको आइडिया मिलेगा कैसे कैसे वो लोग improve। और ये कोचिंग वाले चक्कर में वो नहीं पड़े कि साइकोलॉजी टेस्ट प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन आंसर रटने हैं इंटरव्यू के लिए, ऑल दैट दोस थिंग्स आर नॉट नीडेड। फाइन, ओवरऑल इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड, जो मैं 4 चीजें बोलता रहता हूँ वो है। फाइन, थैंक यू सुनील। एमी, sir, the profession I work in isn't related to what I have studied. I am competitive and have thorough understanding of my work, but not my BTech IT. There is just no problem, maybe. Just no problem. It is the most natural. Because whatever you are doing, you are focused on that, and your knowledge and abilities would be improving in accordance with your needs. So that's absolutely fine. We understand that. So don't get hassled. But at least your basic concept of what you did in your engineering, that understanding you should have. Fine. That is all what we need. Yeah. Thank you. Tanu, I want to prepare for CDS AFCAT exam, but I'm working 9 hours in office, so I'm not able to prepare. Should I quit my job or not? Generally, I don't advise people to quit their job. It's not a good thing. Right? It shows, firstly, sort of weakness कि आप take on नहीं कर सकते. Because with 9 hours of work and all that, if you are overall competent, you should be able to get. Like AFCAT exam is very easy exam, not a difficult exam. अब आपका अंग्रेजी और रीजनिंग ठीक ठाक है तो वो मोटा मोटा काम तो उसमें ही हो जाता है उसमें ना, एंड बाकी नेगेटिव सेगेटिव आप ना लें। तो इट इज दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ योर्स इज आई डोंट सब्सक्राइब टू इट, पर्सनली आई डोंट सब्सक्राइब टू इट। बाकी यू विल हैव टू टेक योर डिसीजन, बिकॉज had I been in your place, I would have quit my job. Fine. So this is what it is. बाकी डिसीजन आप लीजिए। अगर आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो फिर आई विल बी एबल टू गिव यू a more specific advice after knowing things. So choice आपकी है. Fine. So that's it. Yeah. Thank you.
Manpreet. I'm in 12th. I have not played any sports, but doing physical activities, running, workout. There is just no problem, Manpreet. Just enhance your physical abilities. That is what is needed. कोई फर्क नहीं पड़ता sports games वगैरह से, ठीक है? Don't get bothered. Yeah. Achha, you got further questions. And your videos are really helpful. I'll be joining your program in future. Most welcome, Manpreet, and thanks a lot for acknowledging. And I'm so happy that our videos have been of some help to you and some others also like you. Yeah, thank you. Dipan, I'm a fitness enthusiast. I do go to gym, but nowadays I'm thinking to do exercise at home. It'll save my time for studies that I believe there's just no problem. You could do anywhere. Gym is not the only place. You can exercise anywhere. So that's not an issue. So long as your fitness parameters are reasonably good, there is just no problem. Right? For like if you can run 5 kilometers in something like 23, 24 minutes, you can do 40 push-ups, 10 pull-ups, 40 sit-ups, then physically you are very okay for selection. Fine. So this is what it is. Yeah. Thank you. Jai Hind. Yeah. Cassius Clay. Good. Muhammad Ali ka pehla naam. I am in the first year of my college. What should be my main focus? I'm going to make myself more competent. I said so. I'll be repeating again. Your academic competence, most important thing. English next. Physical fitness thereafter. And general knowledge thereafter. That's what. Yeah. Thank you. Yeah, please post your queries. Okay. Uti. I'm also improving 100-meter sprint time day before yesterday. I noted it was 11.9. That's pretty big. Good, yeah. Below 12 seconds is good. Good, good. Not that you see, it shows that your athletic ability is good. You're a good sprinter. You're a fast runner. It's helpful in all sports games and all that. But it will not give you any undue edge in the SSB, So that is what it is. But confidence-wise, yeah, that your physical process is good, so it gives you confidence. To that extent, it is, significant. Yeah. Thank you, Puti. Ritik. So, how to manage physical fitness during preparation and how to live stress-free life. Constantly stressed over my future as I'm 25 and still studying. Suggest something, sir, to get rid of overthinking. Get hold of my book. We have written about these things. Even on our videos, we have posted things about personality development. A lady comes to us as a guest. This is Sunita, madam. So she has also spoken about these issues. I also keep speaking about the stress management. Uh, you know, ऐसा नहीं है स्ट्रेस फ्री लाइफ हो नहीं जाती है स्ट्रेसेस तो देयर आर देयर पार्ट ऑफ लाइफ वंस यू आर बोर्न you become alive so from childhood till you go out of this world there would be things this is how life is but we have to manage these things तो मैंने बुक पढ़ के कुछ क्लैरिटी शायद मिले मैं भी टू मैनेज और नहीं तो फिर यही हो सकता है हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करिए तो मैं असेस करके व्हेन वी पर्सनली इंटरेक्ट आई विल एबल टू गाइड यू बेटर कि कैसे कैसे चीजें की जा सकती है तो दैट्स व्हाट इट इज पर अश्योरेंस नहीं है कि ये चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी क्योंकि motivation, determination, आपका nature, these are things which you can mold, but how much of motivation and desire you have to do that is, depends on every individual. That's what it is. Right? Yeah, thank you. Ajit, I'm in class 11. Can you appreciate advice how a student can conduct his day life, not on देखो मैं लेजिस्लेट नहीं कर सकता हूं आपके लिए कि क्या करना चाहिए बिकॉज आई एम नॉट यू ठीक है ना यू सी आई नेवर अटेंडेड
any extra tuition class in my life. Now, 90% of the students do that. So, अब हमारा और आपका आउटलुक में यही डिफरेंस आ गया. I was playing a lot of sports. I mean, till my class 11th, and when I joined NDA, and in NDA also I continued doing the same. So my life has been built around a lot of physical activities, and with the aim that whenever academic things I have confronted, I have focused on getting clarity in those things in the minimal possible time. Like no revision, re-revision, things like that. तो अब जो मेरा अप्रोच रहेगा वो आप पे अप्लाई नहीं हो पाए. डिफरेंट लोग हैं. तो अब एक सैंपल हमने डाला है. अगर आप YouTube में हमारा सर्च आउट करें, एक जैक एंट्री का बॉय एंड अ गर्ल हाइपोथेटिकल केसेस, कितना दिन का प्रोग्राम है योगिता करीब उसमें दिया हुआ? Some it is 70-day plan or something. 70. हाँ, कुछ ऐसा है. 70 डे का शायद प्लान है. तो दैट विल गिव यू एन आइडिया एज टू हाउ अ प्लान कैन बी मेड. बाकी आप अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा. तो ठीक है ना. और अगर हमारा गाइडेंस लॉन्ग टर्म आप ज्वाइन करते हैं तो देन आई मीन आई विल हेल्प यू डू दैट बिकॉज आई विल बी एबल टू असेस यू एंड देन advise to you what weightages you should allocate to the various things which are needing improvement. And then in accordance with that, you can, we can formulate a plan and then execute it. So that's what it is. You can't have a one size fit plan. That's not there. Fine. It has to be tailor made for every individual's needs. Fine. Yeah. Thank you, Ajit. Those are all the questions, Yogita. There are That's a more posting. Bruce. Any parameters to self-evaluate on WAT and SRT? मेरा बुक ले ले यार, या हमारे वीडियो में देखना, हम इवेलुएट करते हैं एसआरटी का. देखो यार, देखो WAT को तो छोड़ दो. WAT को ट्रीटेड एज एन एक्सरसाइज ऑफ इंग्लिश ग्रामर. फाइन. राइट शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस. डोंट ट्राई टू इम्प्रेस एनीवन. Things to be observed. Whatever you write, the meaning should be sensible and the language should be correct. Fine. As far as SRT are concerned, think of the principles of communication. Principles of communication are that first principle is that whatever you write, it should be clear. Clarity means that whatever is there in your mind, the reader should understand it exactly the same. So expression ठीक होना चाहिए. So that's clarity. Next is that it should be comprehensive. Means there should be no unanswered questions left. जो जवाब दिया है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए. एंड थर्ड प्रिंसिपल इज ब्रेविटी. अननेसेसरी चीजें नहीं होनी चाहिए. फाइन. सो दिस इज व्हाट इट इज. लेट्स टेक एन एग्जांपल. You are going on a road and you found an accident took place. एक बच्चे को चोट लग गया. So now what will you do? तो क्रोनोलॉजी में चलिए. सबसे पहले गए आप उसके पास में, फर्स्ट एड दिया, फिर उसको अर्लीस्ट जो था, कोई भी गाड़ी शाड़ी आ रही थी उसमें हॉस्पिटल इवैक्यूएट किया, फिर उसके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म किया, और जब उसके फैमिली मेंबर्स अगर आ गए तो देन दे विल टेक केयर. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर टू बी डन. नाउ समटाइम्स इट अपीयर्स ये ना लॉन्गिश है, तो इसमें वो लिखने में आप अंग्रेजी एसआरटी में चक्कर में मत दो. इसमें वर्ब शब्द ये वो छोड़ दो. आप जो लैंग्वेज आजकल यूज करते हैं ना, ईमेल या अपने व्हाट्सएप वाली, वो यूज करो. इसमें कि यू लिखने के लिए एक बड़ा यू बना दिया, एज सून एज पॉसिबल को ASAP लिख दिया. ऐसे ऐसे जो आप चीजें यूज करते हो, काइंडली यूज देम. फाइन. या ऐसे ही लिख दो, जैसे इसको हमने एग्जांपल दिया, यू नो, रैन, गेव फर्स्ट एड, इवैक्यूएटेड हॉस्पिटल, informed family.
fine. And thereafter, got on with your work. इतना भी अगर आप लाइन डाल के लिखते हैं, that's also good enough. तो काफी मैंने को देखा है एसआरटी में लोग टाइम कम हो जाता है थोड़ा का, वो 35 वगैरह तक ही पहुंचते, 35-40 तक. दैट्स नॉट गुड. एम शुड बी टू रीच जोन ऑफ 45 प्लस 45-50 करना चाहिए. तो देन इट इज. तो दीज आर थिंग. इवैल्यूएशन में यही है जो मैंने टिप्स दिए हैं. बाकी तो हमारे बुक्स में वीडियो से देखे तो आपको क्लैरिटी थोड़ा मिल जाए. ठीक है ब्रूस? या थैंक यू. Atul, why CDS Navy screen is less as compared to CDS Army? Because reporting is like tech entry like 100, 120. They only see. I won't know that. ऐसा कुछ legislated नहीं है. और आप ये जो कह रहे हो, I do not know whether you have got statistically correct data. I would take such information anecdotal. तो ये कोई statistically proved डेटा नहीं है जो आप दे रहे हैं मेरे को. तो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट अपॉन इट. ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज ऑल सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस, एसएसबीज आर सपोज्ड टू वर्क एग्जैक्टली इन द सेम वे. थोड़ा बहुत कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, नेवी का, एयरफोर्स का, आर्मी का, कोस्ट गार्ड का, बट दे आर मिनिस्क्यूल बिकॉज वी कीप हैविंग स्टैंडर्डाइजेशन एक्सरसाइजेस टू सी टू इट दैट all assessors, work practically in the same way. That's what it is. Yeah, thank you. Could you please clarify what you mean by academic college? College subject CDS. देखो सीडीएस ओरिएंटेड ही रख लो तो ठीक रहेगा, उसमें क्लैरिटी ले लो. दैट विल बी. जो पढ़ा है वो क्लैरिटी से समझाओ. फाइन. दैट्स इट. थैंक यू. इज दैट ऑल? Sending, sir. 5 minutes more. Okay, fine. So we'll hold on. Sparsh. Working aspirant might not be possible for me to cover everything, but till this reason, will the I understand? Will it sound like an excuse? Don't bother. You state the truth. Fine. You do your bit, what you can. And if you are overall competent, you will be selected. Interviewing officers have got more experience than you have. They've gone through various stages of life. Probably the children are also studying, so they understand all these. Maturity है, ऐसे नहीं असेसर बन के बैठे. आप टेंशन इन चीजों की मत लो कि वो क्या सोचेगा, उसके दिमाग में क्या जाए. अगर तुम्हारे में काबिलियत है तो आपको सेलेक्ट करेगा, और नहीं है तो नहीं करेगा. दैट फाइन. To do your bit and don't bother about this. Yeah, thank you. Meet. If I drop here for CDS and CAPF, require more preparation than CDS, will it justify? देखिए क्या है, ये आपका है. Once again, I'm telling you, I would not do that, and I don't advise anyone to do that. पर अगर आपका लेवल ऐसा है कि आपसे नहीं हो सकता है, फिर आपको करना पड़ेगा. But if you then also waste time, then that's not this thing. तो आप कर लीजिए, क्योंकि भाई आपकी कहानी से ये पता चलता है कि आप बिना ड्रॉप किए पास हो गए ही नहीं. तो पास हो गए नहीं तो आप पहुंचोगे ही नहीं अंदर. तो अंदर ही नहीं पहुंचोगे तो फिर कहानी का आपकी शुरू कहाँ होगी? इंटरव्यू अफसर तो बाद में पूछेगा ना. तो कर लो भाई ड्रॉप. ठीक है ना? नॉट दैट आई एडवोकेट दिस एज एन अप्रोच. इट मे बी ट्रू इन योर स्पेसिफिक केस. डू इट. फाइन. या दैट्स इट. थैंक यू. जस्टिफाई को छोड़ दो यार. जस्टिफिकेशन तो है ही. जस्टिफिकेशन तो ये हो गया ना कि भाई तू अगर नहीं ड्रॉप करेगा तो पास ही नहीं होगा. जस्टिफिकेशन इज देयर. आईओ का जस्टिफिकेशन को छोड़ो, अपने लिए जस्टिफिकेशन दे. ठीक है क्या? थैंक यू मीत. Others, I'm pursuing electrical and electronic engineering, but my interest is in software jobs. I'm working on that. I'm more comfortable in this. Should I? Yeah. There's no problem. Be frank and open about this. Don't get bothered. Yeah, others. Yeah, thank you. Sir, last question. Okay, Hemant, sir, in blank story, we should make story at their self. Please go with a prepared story, yaar.
ऐसे ही तुम लोग इतना प्रेशर में रहते हो, प्रिपेयर करके जाओ पूरी, ठीक है ना? हाँ, ठीक, तो दैट इज व्हाट इट इज। और हमारे गाइडलाइंस देखो हमारे वीडियोस में, हमारी बुक में, prepare in accordance with that so that you can write it off inside 3 minutes. HD को prepared रखो so that 15 मिनट का you can finish it off inside 10 minutes. Fine, so that you can revise some of your other work. And that revision would prove quite crucial in improving कुछ sentence ये वो छोट क्या हो छोटी मोटी चीजें like that. Fine, so that should be your approach. Fine. Yeah, thank you so much. Thanks all of you for attending the session. I hope I have been able to settle your queries to a reasonable degree. Thank you so much.